दो पेज है अच्छे से हाँ ये टॉप कब से चार्ज हाँ अच्छा छोटी है इसमें काय मिच्छे छोटी है ना इसमें निंद्री छिपाते हो मुझे क्या शुक्र ये क्या कर हिंदी ट्रांसलेशन हाँ नहीं रहता है यार बात तो फ्रेश बोतल में आना पास एक बार मुख्य बात ही छूट जाती है अच्छा सर जी टाइम पर ये मानव सुनाई थी आत्मा ना थोड़ी चिंता हो गई मुझे पता नहीं क्यों क्या वैसे चिंता शुद्धि की इधर विचार आते रहते हैं उल्टे सीधे सब ठीक है कि नहीं भगवान ही जानता है मैं तो तो सुखी रहती सबसे पहले तो मुझे मैत्री मेरे से मैत्री मेरे से द्वेष कम करो evening chanting, page 14 in the book. Yo so bhagava arham sammo sambuddho svakhato yena bhagavata dhammo supatipanno yassa bhagavato savak sangho tamayam bhagavan sadhammam sasangam ime sakari yatharham आरोपिते अभिपूजयाम साधुनो बन्ते भगवा सुचिरपरिबुद्धोऽपि पश्चिमा जनता मानसा इमे सकारी दुर्गतपणाका
प्रभूते पटिगणातु अम्हाकं दीर्घहिताय सुखाय अर्हं सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादी स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पुब्बभाग नमकारं करोमि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य हन्दमयं बुद्धानुसतिनयं करोमि तं खूपन भगवन्तम् एवं कल्याणो कीर्तिसद्दो अभुगतो इति पिसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि सत्तादि मनुस्सानं बुद्धो भगवाति हन्दमयं बुद्धाभिगीतिं करोमि बुद्धवारहन्तवरता द्विगुणाभियुतो शुद्धाभिज्ञानकरुण इसमागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दं बुद्धो यो सब्बपाणिनं शरणं खेममुत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धस्सस्मि दासीव बुद्धो मे सामिकिस्सरो बुद्धस्सहं नियादीमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि बुद्धस्येव सुबोधितम् नास्ति मे शरणं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानाय यं पुण्यं पशुतं इद सब्बेऽपि अन्तरायामि आहेषु तस्य तेजसा हन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनयिको पश्चात् वेदितव्यो विन्योहीति हन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमि स्वाखात तादिगुणयोगवस्नसेयो यो मग्गपाकपरियतिविमोखभेदो धम्मो कुलोकपतन
तदधारि धारी वन्दामहं तमर वरधम्ममीतं धम्मो यो सबपाणिनं शरणं खेनं उत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्मि दासीव धम्मो मे सामिकिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यां धम्मस्यैव सुधम्मतम् नास्ति मे शरणम् अन्यत् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानाय यं पुण्यं प्रसुतम् इद सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा हान्दमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतन लोकसाति हन्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसे सधम्मजो सुपटिपतिगुणादियुतो यो अट्टविदो अरियपुगलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरा सयकाय चित्तो वन्दाम्यहं तमरियगणं सुशुद्धं सङ्घो यो सबपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं सङ्घस्मि दासीव सङ्घो मे सामिकिस्सरो सङ्घस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि सङ्घस्सोपटिपन्नतं नत्ति मे शरणम् अन्यत् सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने सङ्घं मे वन्दमानाय यं पुण्यं प्रसुतम् इद सभेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा Connected to 6V77382D.
lima kali tu. Selalu kan. करो लाइट बंद। अच्छा छोटे हाँ कर ගිරිමානන්ද සුත්ත. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. තේන කෝපන සමයේන ආයස්මා ගිරිමානන්දෝ ආබාධිකෝ හෝති දුක්ඛිතෝ බාලගිලානෝ අත්ථකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ යේන භගවාතේන උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදිත්වා ඒකමන්තං නිචීදී. ඒකමන්තං නිසින්නෝකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ භගවන්තං ඒතදෝච ආයස්මා භන්තේ ගිරිමානන්දෝ ආබාධිකෝ හෝති දුක්ඛිතෝ බාලගිලානෝ සාදු භන්තේ භගවා යේනායස්මා ගිරිමානන්දෝ තේනුපසංකමතු අනුකම්පං උපාදායාති. සචේකෝ ත්වං ආනන්ද ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ උපසංකමිත්වා දස සංඥා භාසෙයාසී ථානං කෝපනේතං විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භේය.
කතමේ දස අනිච්ච සංඥා අනත්ත් සංඥා අසුභ සංඥා ආදීනව සංඥා පහාන සංඥා විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා ආනාපාන සති කතමාචානන්ද අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති රූපං අනිච්ඡං වේදනානිච්චා සංඥා අනිච්චා සංඛාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡං ඉති ඉමේසු පංච සුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනිච්ච සංඥා කතමාචානන්ද අනත්ත් සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති චක්ඛුං අනත්තා රූපං අනත්තා සෝතං අනත්තා සද්දා අනත්තා ධානං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා ජීවා අනත්තා රස අනත්තා කායෝ අනත්තා පොට්ටබ්බා අනත්තා මනෝ අනත්තා ධම්මා අනත්තාති ඉති ඉමේසු චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු අනත්තානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනත්ත් සංඥා කතමාචානන්ද අසුභ සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු ඉමමේව කායං බුද්ධං පාදතලා අදෝකේ සමත්තකා තච පරියන්තං පුරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වික්ඛති අත්ථි ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ මන්නාරු අට්ඨි මිඤ්ජං වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකං පියකං පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං පිත්තං සෙම්හං උබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ අසුවසා khelo සිංහානිකාලසිකා මුත්තං ඉති ඉමස්මින් කායේ අසුභානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අසුභ සංඥා කතමාචානන්ද ආදීනව සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ
ගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාර ගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති බහු දුක්ඛෝ හෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ ඉති ඉමස්මින් කායේ විවිධා ආබාධා උප්පජ්ජන්ති චේයතිදං චක්ඛු රෝගෝ සෝත රෝගෝ ධාන රෝගෝ ජීවහා රෝගෝ කාය රෝගෝ සීස රෝගෝ කන්න රෝගෝ මුඛ රෝගෝ දන්ත රෝගෝ කාසෝ සාසෝ පිනාසෝ දහෝ ජරෝ උච්චි රෝගෝ මුච්ඡා පක්ඛන්දිකා සුලා විසූචිකා කුට්ඨං කණ්ඩෝ කිලාසෝ සෝසෝ අපමාරෝ දදු කණ්ඩු කච්චු රඛසා විතච්චිකා ලෝහිත පිත්තං මధుමේහෝ අංසා පිලකා භගන්දලා පිත්ත සමුත්ථාන ආබාධා සිම්හ සමුත්ථාන ආබාධා වාත සමුත්ථාන ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා උතු පරිණාමජා ආබාධා විසම පරිහාරජා ආබාධා ඕපක්කමිකා ආබාධා කම්ම විපාකජා ආබාධා සීතං උන්නං ජිඝච්ඡා පිපාසා උච්චාරෝ පස්සාවෝති ඉති ඉමස්මින් කායේ ආදීනවානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද ආදීනව සංඥා කතමාචානන්ද පහන සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු uppannං කාම විතක්කං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannං යාපාද විතක්ඛං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannං විහිංසා විතක්කං නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannuppanනේ පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති අයං උච්චතානන්ද පහන සංඥා කතමාචානන්ද විරාග සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සම්භූපදි පටිනිස්සග්ගෝ තන්නක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති අයං උච්චතානන්ද විරාග සංඥා
කතමාචානන්ද නිරෝධ සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදීපටිනිස්සග්ගෝ තණ්හක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති අයං උච්චතානන්ද නිරෝධ සංඥා කතමාචානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු යේ ලෝකේ උපායුපාදානා චේතසෝ අධිඨානාභිනිවේසානුසයා තේ පජහන්තෝ විරමති න උපාදියන්තෝ අයං උච්චතානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා කතමාචානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු සබ්බ සංඛාරේ අට්ඨියති අරායති jigucchati ayam vuccatānanda sabba saṅkhāresu anicca saññā katamācānanda ānāpāna sati idhānanda bhikkhu araññagato vā rukkha mūlagato vā suññāgāragato vā nisīdati pallaṅkaṁ ābhujitvā bhujunkáyaṁ panidhāya parimukhaṁ satiṁ upaṭṭhapetvā so sato assa sati sato passa sati digang va assa santo digang assa samiti pajanati digang va passa santo digang passa samiti pajanati rasaṁ va assa santo rasaṁ assa samiti pajanati rasaṁ va passa santo rasaṁ passa samiti pajanati sabbakāya patisaṅvedī assa sissamīti sikkhati sabbakāya patisaṅvedī assa sissamīti sikkhati passambhayaṁ kāya saṅkhāraṁ assa sissamīti sikkhati passambhayaṁ kāya saṅkhāraṁ passa sissamīti sikkhati pīti patisaṅvedī assa sissamīti sikkhati pīti patisaṅvedī passa sissamīti sikkhati sukha patisaṅvedī assa sissamīti sikkhati sukha patisaṅvedī passa sissamīti sikkhati citta saṅkhāra patisaṅvedī assa sissamīti sikkhati citta saṅkhāra patisaṅvedī passa sissamīti sikkhati
පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අභිප්පමෝදයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අභිප්පමෝදයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සමාදං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සමාදං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විමෝචයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විමෝචයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විරාගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විරාගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති නිරෝධානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති නිරෝධානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අයං උච්චතානන්ද ආනාපාන සති සචේක්ඛෝ ත්වං ආනන්ද ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ උපසංකමිත්වා ඉමා දස සංඥා භාසෙයාසි ථානං කෝපනේතං විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ ඉමා දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ථානසෝ පටිපස්සම්භේයාති අතකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ භගවතෝ සම්තිකේ ඉමා දස සංඥා උග්ගහෙත්වා යේනායස්මා ගිරිමානන්දෝ තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා ආයස්මතෝ ගිරිමානන්දස්ස ඉමා දස සංඥා අභාසී අතකෝ ආයස්මතෝ ගිරිමානන්දස්ස ඉමා දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ථානසෝ පටිපස්සම්භී උත්ථාහි චායස්මා ගිරිමානන්දෝ ධම්මා ආබාධා තථා පහිනෝච පනායස්මතෝ ගිරිමානන්දස්ස සෝ ආබාධෝ අහෝසීති
සච්චවජ්ජේන සුත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්චවජ්ජේන සුත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්චවජ්ජේන සුත්ථිතේ හෝතු සම්බදා. We will now listen to a discourse by Ajahn Punnadhamma, See the World as Empty. लाइट ये ऑन रखेंगे ना. अच्छा दिल का बांधी तो सुन लिया. The one teaching which is truly unique to the Buddha is the teaching of emptiness, of not self. This was something brand new brought into the world. The Buddha was teaching in an environment, in a place and time when there were many philosophers and samanas, and the field of thought, of philosophy and of spiritual ideas in India was very rich. But it took a Buddha to discover and proclaim this idea of the emptiness of self and other. This was something brand new and unique. And it's just, the teaching of not self is still to this day subtle and difficult. And people first encounter it, they find it either baffling or frightening, because we have an implicit assumption of an essence of self. And it seems so natural to think in that way. But it is exactly this wrong thinking, the identification of substantiality of the self and substantiality of the objects, is precisely this wrong way of thinking that leads us into suffering. This is a root ignorance. This is what keeps us tied to samsaric becoming, to conditioned reality, to the cycle of birth and death. The Brahmin student Mogaraja asked the Buddha, "How can I escape the gaze of the Lord of Death?" And the Buddha answered with three terms. He said, "Be ever mindful. Abandon thoughts of self and see the world as empty." So Mogaraja's question is a way of phrasing, in rather poetic terms, a way of phrasing the quintessential existential dilemma. Now, the
what the Zen people call the great matter, the question of life and death. This was, of course, the word empty का मतलब क्या हुआ यहाँ? शून्य है, नहीं, शून्य मतलब संसार में कुछ भी नहीं है, उसमें सार नहीं, मतलब दिखता है हाँ, सॉलिड है लेकिन अंदर कुछ नहीं, शून्य है, सब चीज़ें इस तरह से। नहीं तो जब आप निर्वाण मतलब आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि सब शून्य है। पहले तो समझना पड़ेगा, समझने बगैर समझे तो नहीं। साधना करने से मालूम पड़ता है, जब शरीर को साधना करते हैं सब खत्म हो जाता है। ऐसा फीलिंग आई है कि देयर इज नथिंग इन द बॉडी, हाँ, मतलब यू वन कैन फील दैट। हाँ, भंग की अनुभूति हुई होती है। हाँ, अच्छा। This was, of course, the question asked by the Bodhisattva before his enlightenment, when he went seeking wisdom, seeking liberation, was how can I escape from birth and death? So the Buddha's answer is entirely in terms of our internal states, how we hold the mind and how we see and perceive. It begins with being mindful. Mindful in Pali is sati. And sati is tied to the idea of memory. In the Sanskrit is smrti, which means memory. The sati has been translated generally as mindfulness, but some of the older English translations use recollectedness, which I think is probably better, probably more accurate. I think that a good way of a short definition of mindfulness is remembering to be present. So when you're mindful, you remember who you are, where you are, what you're doing. You feel situated, you feel stable, you're not confused. This is tied up with the idea of wakefulness. The word Buddha means one who is awake. And that's what, as practitioners and followers of the Buddhist path, we should be endeavoring to be more awake. If you're not mindful, you're stumbling through life as if in a dream. You're confused. No. So be mindful, be awake. Remember to be present. Remember to be, have the mental faculties gathered. So this is the initial injunction to Mogaraja, as nothing can be accomplished without being mindful. This is the first thing. Then the other two terms are seeing the emptiness, the voidness of self and other. Be ever mindful, Mogaraja. See the world as empty and abandon thoughts of self. Abandon thoughts of self. The ordinary person, the unenlightened person, the Patujana, has a default way of understanding, of assuming a reality of an essence, of a self. This doesn't have to be elaborated into a philosophical thought system, although it can be. In most cases, it's just a default assumption. But in ancient India, for example, there was very prevalent the idea of an Atman. This is Sanskrit, the Pali is Atta. An Atman or an Atta was conceived to be
the stable, imperishable, unmoving, constant essence of a being. For example, in the later text, Hindu text, the Bhagavad Gita, it's described that when a person dies and is reborn, the Atman is unaffected, and it's like a person waking up in the morning and putting on a fresh suit of clothes. But the concept of a self, whether it's just assumed or whether it's elaborated philosophically as an Atman or a Jiva or a soul, this is not a concept that leads to freedom, to liberation, because the being who identifies with a self has something to lose, and there's a constant desire in the mind to protect the self, to aggrandize the self, and any change in the phenomena is seen as a threat to the self. So it's not a way of seeing that conduces to peace or to happiness. One is always afraid. One feels there is something to protect, something to nourish. And in reality, we see that all the phenomena, the aggregates that make up a human being, are constantly in a state of change. The body changes. We sicken or we get old. We get injured. This is a change in the aggregate of the body. The mind is constantly changing. The feelings, we pass from happy feeling to sad feeling and back again. The mental formations are in a constant state of flux. So when we actually look, we don't find anything stable, permanent, and lasting. This becomes a difficult delusion to shake, to become free of. And it exists in the mind in layers. One form of the self-view is Sakaya Ditti, which literally means the own body view. It's usually translated as personality view. It's one of the fetters, that is the samyojana, that's only overcome with the attainment of stream entry, the first stage of awakening, the first realization of the unconditioned. And this is a sense of self at the level of view, ditti. Ditti is something a bit more, it's a bit deeper than an opinion or a belief. It's, although it includes that, it manifests as that, it's essentially the way of seeing the world, the way we hold reality in the mind. It's close to the German philosophical term Weltanschauung, if anyone's familiar with that. It's a view in the mind, the way we view the world, the way we see things. And initially, before any development of wisdom, we inevitably see things in terms of self and other. And this is personality view. This is Sakaya Ditti. And the stream winner, the Sotapanna,
has glimpsed the unconditioned. And this experience changes the base, the root of the being's understanding completely, so that it's no longer possible for the stream winner to hold this view of self, this Sakaya Ditti. It's possible to work towards an understanding of not self and a attenuation of Sakaya Ditti prior to stream entry, but it's like an asymptote, a mathematical asymptote, a limit. It approaches zero endlessly but never quite reaches it, and it takes this experience of the unconditioned to make the final leap. But we can approach the idea of not self in one of two ways, either by a close examination of the constituent processes that make up our human existence. This is examination of the aggregates to begin with. The body, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. And each one of these can be further divided and subdivided. And nowhere do we find anything that can be identified as a self. So this is looking closer and closer, more minutely, and it's essentially a process of exhaustion. We look at each particular component and we see this is not self. No, this is not me, this is not mine. And nowhere find any component, any process, anything that we can identify as this is the essential core. This is unchanging. This is the central essence. There's no such thing. There's only transient, immediate objects, processes. To think clearly about this, one of the stumbling blocks is linguistic. We inevitably have to use nouns, and it doesn't matter what language you're using, whether it's English or Pali or Thai or any other language. We talk about mind and consciousness and feelings using nouns. So this creates an assumption in the mind that where there's something substantial, some reified object that we can hold and deal with, whereas actually they're only verbs in reality. Things are constantly happening, but there's no thing doing it. It's an ongoing process. So this leads naturally into the other way of thinking about not self, the other approach. Instead of going to a finer and finer degree of resolution, we broaden our perspective and we look at the relational aspect of things. And this is very important as well, and is very useful as a balance. This is the contemplation of the dependent origination, that nothing arises without a cause, and nothing arises from a single cause. Everything is interdependent. So no part of our being and no part of the external world
is fully independent. In fact, nothing has any existence without a relational aspect. One very succinct way this is expressed is the saying, nothing exists from its own side. Nothing exists from its own side. This is a very deep and useful contemplation. Things exist only from the other side. And when you go out to the other side, that doesn't exist either. That only exists from the other side. Things are a reflection of each other. They're without intrinsic essence. So see the world as empty, abandoned thoughts of self. So we can train ourselves to think in terms that are congruent with Dhamma. And this is abandoning thoughts of self. One practical way this can work and in ordinary life is dealing with troublesome mental states, whether it's anger or fear or grief. When oppressive mental states arise, don't think, I am angry or I am afraid. Instead, regard it as anger has arisen or fear has arisen. So we don't personalize, we don't take ownership of the transient mental states. So we don't identify with them. It's not me, not mine. So this is talking about self at the level of view, Sakkaya Ditthi, and this is abandoned by the stream winner, the Sotapanna, but there still remains another more subtle layer of self-identification, which is Asmimana, which is the way of holding self not with view, but with perception. Well, this is what distinguishes it. So a stream winner has abandoned the view of self, but there still remains a perception of self. This is a much more subtle level of self-identification. It occurs at the level of perception. One way of thinking of it is that there remains a privileged perspective. There's still a tendency to perceive the world in terms of self and other, even though there isn't a view of self. The self is already seen as unreal, but there's still a tendency for the mind to organize perception in those terms of self and other. So this is a deeper, more subtle layer of the delusion. So it's not all overcome at once. This is something that takes a persistent effort to approach. But the more we can get glimpses into the emptiness of self, the freer, the lighter the mind becomes. And it's possible to have these glimpses, this understanding, dawning of understanding, to see the unreality of this concept of self. And this is a way of approaching freedom from fear, freedom from oppression, freedom from anxiety. The mind begins to lighten, because there's nothing
to gain, nothing to lose, nowhere to go. So abandoning thoughts of self, this is what might be called, we might call this the special case of the more general principle of emptiness. See the world as empty, Mogaraja. That the emptiness applies not just to the self, but to all phenomena. Every object of consciousness, every Dhamma is without a self-essence. There was a concept in Indian thought of the svabhava, the own essence of things. And this has a close relative in Western thought, in the idea of, that comes from Aristotle, of substance and quality. That things have a substance, and then the substance can be colored by different qualities. The Buddhist view was that no such essence can be found, that all dhammas which arise are essentially empty. They don't exist from their own side. Nothing exists from its own side. And when we can look at phenomena and see it as essentially empty, then we're following this injunction, see the world as empty. This is something that we can train methodically. We can train the mind to look at the objects arising. And the technical term for an object in Pali is a Dhamma. And the mind takes Dhammas. The Dhamma is the minimalist unit of reality. It's been translated, one translator translated as point instant, which I thought was very good, very really points to the idea of a Dhamma. Is a point is a mathematical concept of a location in space with 0 dimensions. And an instant is a location in time of 0 duration. So point instant is the minimalist expression of reality. And all of reality is composed of these constantly fluctuating dhammas that only exist for this instantaneous moment. And we can, when we do insight meditation, when we do vipassana, we're looking with the mind at dhammas. We're training the mind to observe the actuality, the reality of things, the fundamental nature of the momentary occurrence. And when this is done well, then when it's done properly, then the mind becomes very bright and clear and fluid, and experience is reduced to its bare fundamentals. In any single moment of time, there is only the object and consciousness knowing the object. And in the expression of Mahasi Sayadaw, he said, there is only the object and mind knowing the object and no third besides. The third being the self. So there is the object and the mind knowing the object, but there's nobody doing it.
it becomes quite clear that any sense of a self that's either creating the objects or activating consciousness is quite superfluous. There's no point to the idea. It's a useless, as an explanatory object. It has no value. It has no place. There is simply the object and mind knowing the object. The idea of a self, in essence, is just a convention, is a kind of mental shorthand for explaining things when we don't fully see, when we don't fully understand. So it's a kind of a superstition. It's a kind of a superstitious illusion in the mind. It's creating something as an organizing principle that's when things are understood properly, it's completely superfluous. So there's an emptiness both sides. The mind knowing the object is empty, and the object that is seen or known is empty. And this emptiness, sunya, is the most fundamental principle of reality. One of the important teachings of the Buddha is that every Dhamma, whether it's internal or external, whether it's past or future, it has the three characteristics: is dukkha, anicca, anatta. Dukkha is imperfection, unsatisfactoriness, loosely speaking, suffering. Anicca is impermanence, transience, momentariness. And anatta is emptiness, not self, not existing from its own side. And these three characteristics are found in all, I shouldn't say all dhammas, they're found in all sankharas, all compounded things. So they apply to all conditioned phenomena within samsara. And of these three, it is only anatta that we can say truly applies to all dhammas, because it also applies to nibbana, the unconditioned, is also empty, void. So this principle of sunya applies to both samsara and nibbana. So it is truly the most fundamental principle of reality. And it's a core principle of Buddhist practice to strive to approach this understanding. So remember the admonition to Mogaraja: be ever mindful, see the world as empty, and abandon thoughts of self. And this is truly the way to experience liberation, wakefulness, clarity, peace. And this is a core teaching of Buddhism, and the one teaching that's unique to the Buddhas.
तो इस देशना का हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। अजान ने शुरू किया कि जो शून्यता की अवधारणा है, अनात्म की अवधारणा है, वो भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक खास आयाम है जो बाकी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में नहीं है। और उसके लिए उन्होंने इस बात को ठीक से डिस्कस करने के लिए सूत्र निपात का जो सूत्र है, मोगराज सूत्र, वो उसको उदाहरण बेस बनाया था, जिसमें वो मोगराज उनसे भगवान से पूछते हैं कि मैं क्या करूं जिससे कि मार मुझे देख ना पाए, मतलब मुक्त हो जाऊं। तो भगवान उनसे कहते हैं कि हमेशा सदा सतो, हमेशा सतीवान बनो और आत्मभाव के जो विचार हैं वो त्याग दो और इस संसार को शून्य देखो, सी द वर्ल्ड एज एम्प्टी। तो इसी पे उन्होंने समझाने की हमको समझाया इस बार इसी बात को, तीनों को, कि जो आत्मभाव है वो जब तक हमें मैं का भाव बना रहता है और फिर मैं का भाव रहता है तो दूसरे का भी भाव रहता है और फिर वो फ्रिक्शन रहता है और एक भय का भाव रहता है, चिंता रहती है। तो उसको ये भाव लेकिन इतना बेसिक है, इतना हमारे अंदर इनग्रेंड है कि उसको निकालना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी भ्रम है, लेकिन बहुत टेनेशियस भ्रम है। तो उसके कई तरीके भगवान ने बताए हैं। तो अजान कह रहे थे कि जो ये भ्रम भी है ये अलग अलग लेवल पे रहता है। जो बेसिक लेवल है वो सक्काय दिट्ठी है कि हम अपनी काया को के अंदर सत्य को मानते हैं, कि जो 5 खंड हैं उनको अपना मानते हैं, तो इस कारण से मैं का भाव जागता है। तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक से समझ के धीरे धीरे कम किया जा सकता है और जब निर्वाण की ग्लिम्स भी मिल जाए तो फिर हम उसको पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। तो सक्काय दिट्ठी को समझने से, ठीक से समझने से कि 5 खंड, जैसे हम अनात्म लक्षण सूत्र बार बार पढ़ रहे हैं उसमें भी यही बात आती है कि जो 5 खंड हैं वो अनित्य हैं, बदलते रहते हैं, दुख देते हैं, इसलिए मैं और मेरा नहीं हो सकते। दूसरी जो तरीका है उसको समझने का वो है कि ये इन जो एग्जिस्टेंस है, जो खंड हैं, वो अपने में अलग अलग नहीं रह सकते, उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है, एक दूसरे से उनका संबंध है। और जब चीज़ों का एक दूसरे से संबंध होता है तो वो अपने में अलग नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। तो भगवान की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी चीज़ कॉज जो है, एक कॉज नहीं होता और एक इफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए एक वेब की तरह, एक मकड़ी के जाले की तरह चीज़ें हैं जो आपस में गुंथी हुई हैं, इसलिए किसी को भी अलग करके देख नहीं सकते। और ये अगर हम इस बात को, दो तरीके हैं जिस तरह इस बात को समझने के, अनात्म भाव को समझने के। और इसके लिए प्रैक्टिस के रूप में ये किया जा सकता है कि हम जैसे जैसे कोई भी धम्म जागे, वेदना जागे या संज्ञा जागे या विज्ञान जागे या संस्कार जागे, तो उसको समझें। जब हम ठीक तरह से समझ जाएंगे तो हम उसको पर्सनली नहीं लेते और बार बार याद करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। उस तरह से अभ्यास करने से धीरे धीरे कम हो जाता है सक्काय दिट्ठी का भ्रम। लेकिन उससे भी सूक्ष्म स्तर पे जो भ्रम उन्होंने बताया, जैसे पहले भी बात चर्चा हुई अस्मिमान की, जहाँ पहली बार तो सक्काय दिट्ठी तो एक तरह की दृष्टि है, अस्मिमान एक तरह की अनुभव है, एक तरह का अनुभव रहता है, एक फीलिंग रहती है कि देखने वाला तो मैं ही हूँ, समझने वाला तो मैं ही हूँ। तो परसेप्शन के लेवल पे वो समझता है कि मैं अलग हूँ और दूसरा संसार अलग है। तो वो और गहरी बात है। इसको जितना बार बार जब हम शून्यता का अनुभव करते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये जो संसार को शून्य मानना है वो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल है, जान होता है। और जो सेल्फ को शून्य मानते हैं, सेल्फ अनात्म भाव है, वो उसका एक स्पेशल केस है। और शून्यता कहें या संसार जो है सारहीन है, उसमें कोई सार नहीं है, बदलने वाली चीज़ है। धम्म जो है, हर चीज़ जो है उत्पन्न होती है, वह होती है और निरंतरता से बदलती रहती है। तो जब हम ट्रेनिंग करें, साधना करते हैं और उसको हर चीज़ के उदय व्यय को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं उस बात को
तो ये कि इनमें कोई आत्म नहीं है, कोई सार नहीं है। और अगर ठीक से साधना की जाए, अनात्म बोध की बात को बेसिकली समझ के और उस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए जो भी हमारे अनुभव हैं, तो धीरे धीरे ये बात समझ अनुभव पे आने लगती है कि जो अनुभव हो रहा है उसमें एक मन है और एक ऑब्जेक्ट है, मन है और उसका आलम्बन है, उसमें मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे उन्होंने महर्षि सायडा का उदाहरण देके बताया कि वो कहते हैं कि देयर इज़ माइंड एंड देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड नो थर्ड पर्सन, मतलब बीच में कुछ और नहीं है। और मन और जो आलम्बन है, मन का आलम्बन जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ही शून्य हैं, दोनों में कोई सार नहीं है। तो इस तरह से एक संसार के प्रति जो निर्वेद का भाव है वो बढ़ता है। तो उन्होंने ये अंत में ही कहा कि जो शून्यता का नियम है वो फंडामेंटल है भगवान की टीचिंग का। और जैसे 3 लक्षण बताए जाते हैं, अनित्य, दुख, अनात्म, तो उसमें अनात्म फंडामेंटल है और वो सबके लिए एप्लीकेबल है, अनकंडीशन निबान के लिए भी, जबकि अनित्य और दुख जो हैं वो कंडीशनड एग्जिस्टेंस के लिए हैं, संस्कारों के लिए हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हमको ये मोगराज की जो सूत्र है वो याद रखना चाहिए कि हमेशा सत्यवान रहें, आत्मभाव को त्याग दें और संसार को निस्सार देखें, तो मुक्ति की राह पे आगे बढ़ेंगे। हम ब्रह्म विहारों की साधना करते हैं। चित्त को शांत कर लेते हैं एंड कलेक्ट द माइंड। सबसे पहले मैत्री ब्रह्म विहार, अपने प्रति मैत्री, अपने स्वजनों प्रियजनों के प्रति मैत्री और आरक्षण करने वाले देवताओं के प्रति मैत्री का भाव। सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, और सुखी तब होंगे जब निर्वैर हों, निर्द्वेष हों, चिंता मुक्त हों। जो ट्रेडिशनल चैंटिंग है वो करते हैं। अहम अवेरोमि अव्यापज्योमि अनिगोहोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अवेरा होन्तु अव्यापज्या होन्तु अनिगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु।
आखा देवता भूमट्ठा देवता आकट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अवीरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब सभी प्राणियों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, चाहे हमसे मैत्री का भाव हो चाहे न हो, उनके प्रति भी जिनसे साथ हमारे कोई रिजेंटमेंट है, ग्रीवेंस है, प्रयास करते हैं उनको भी याद करके, और सभी अनंत प्राणियों को याद करते हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव। सम्बे सत्ता सम्बे पाना सम्बे भूता सम्बे पुंगला सम्बे हत्ता भाव परियापन्ना सम्बा इत्थियो सम्बे पुरुषा सम्बे अरिया सम्बे अनरिया सम्बे देवा सम्बे मनुष्या सम्बे विनिपातिका अवीरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। करुणामत का ब्रह्म विहार। हजारों लाखों लोग कष्ट में हैं इस समय, सारे विश्व में। हमारे शहरों में भी परेशानी बढ़ती जा रही है, देश में परेशानी बढ़ती जा रही है, और केवल बीमारी की परेशानी नहीं, आपसी द्वेष भाव की भी परेशानी, दुख की परेशानी। कई हजारों लोगों के स्वजन छूट गए उनसे, लाखों करोड़ों लोग घरों में बंद हैं, व्यवसाय बंद हैं, इस कारण से परेशान हैं। उन सब के दुख दूर हों ऐसी कामना करते हैं, सारी बाधाएं दूर हों, जो रोगी हैं उनके रोग दूर हों, हृदय से ऐसी कामना करते हैं। सर्वे स्त्रियो विवदन्तु सुखो रोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव। मुदिता ब्रह्म विहार। पहले कृतज्ञता ज्ञापन कर लेते हैं, आभार प्रकट करते हैं उन सब का जो इस कठिन परिस्थिति में लोगों की सेवा कर रहे हैं, नाना प्रकार से सेवा कर रहे हैं, किसी भी रूप में, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ, दवाई उपलब्ध कराने वाले, पुलिस वाले, सामान उपलब्ध कराने वाले, सभी का आभार। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी शुभकामना करते हैं और अपने पुण्य उनके साथ साझा करते हैं।
पुण्यस्य इदानि याना अन्यानि कतानि मे ते संच भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। अपेक्षा ब्रह्म विहार मुदिता ब्रह्म विहार वाले सभी लोग जो प्रसन्न हैं, किसी भी कारण से घर में प्रसन्नता है, उनके साथ प्रसन्नता में हम भी भागीदार होते हैं। जो लोग रोग से ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता बनी रहे, सबकी सुख संपत्ति बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं। लब्धा संपत्ति तो मां विगच्छन्तु। और अंत में उपेक्षा ब्रह्म विहार। भगवान की वाणी याद करके कि हम सब सुख या दुख अपने ही कर्मों के फल के रूप में पाते हैं। मन में द्वेष न जागे, क्षोभ न जागे, सत्कर्म करने की प्रेरणा जागे। आए मन भगवान की वाणी याद करते हैं। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिशरणं यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। और समता बनाए रखने में प्रज्ञा बहुत सहायक। हमारी दृष्टि सम्यक हो, हमसे कोई गलत काम ना हो, हम सत्य जैसा है सत्य को वैसा ही देखें, दुख के कारणों को ठीक से समझें, दूसरों पे थोपे ना। तो सम्यक दृष्टि के लिए शुभकामना करते हैं। सर्वे सत्ता सुखी भवन्तु, सर्वे भवन्तु च खेमिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् पापमागमात् मा कञ्चित् शोकमागमात् मा कञ्चित् दुःखमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं